Hello and welcome to Triple S classes. I welcome you all in this free MCQ session which you are getting on this free YouTube platform Triple S. जैसा कि आप जानते हैं हमने MCQ सीरीज स्टार्ट करी थी, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज का सेशन जो लेके आए हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड. So starting today's session with first question. Question number first is, which of the following countries are the members of SARC? First is India, Nepal, China, Pakistan. Choose the correct answer using the code given below. Option A 1 and 2 only. Option B 1, 2 and 3 only. Option C 1, 2 and 4 only. And option D 1, 3 and 4 only. I hope आप सभी ने करेक्ट आंसर गेस कर लिया होगा. The correct answer to your first question is option C, that is 1, 2 and 4. Look, अगर हम सार्क की बात करेंगे, this SARC stands for South Asian Association for Regional Cooperation. एंड इसके जो मेंबर्स है, कुल इसमें 8 कंट्रीज इसके मेंबर्स है, इंक्लूडिंग इंडिया, देन नेपाल, देन पाकिस्तान, देन वी हैव अफगानिस्तान, then we have our neighbor Bangladesh, then we have Bhutan, then we have Maldives and Sri Lanka. These are the important members. 8 members are there. The 3 are given in the question, excluding China. China is not member of SARC. Members are, remember these: India, Nepal, Pakistan, Afghanistan, Bhutan, Bangladesh, Maldives and Sri Lanka. एंड अगर हम और जानेंगे कुछ इंफॉर्मेशन सार्क के बारे में, दीज आर हेडक्वार्टर, दिस सार्क इज हेडक्वार्टर्ड एट काठमांडू, नेपाल. These are the headquarters are at located in Nepal, Kathmandu, and this was established in the year, and the year is important, in the year 1985, and the role is to promote welfare of people of South Asia. Remember this. These are important points. Moving on to, so answer to your first question is option C, excluding China. These all are members of SARC. Moving on to next question. Question number 2 is, BIMSTEC is headquartered in which of the following country? Option A, India. Option B, Nepal. Option C, China. And option D, Bangladesh. I hope आप सभी ने करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा, गेस कर लिया होगा. द करेक्ट आंसर टू योर सेकेंड क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज बांग्लादेश. ढाका, बांग्लादेश. At Dhaka, Bangladesh are the headquarters of BIMSTEC, and this BIMSTEC stands for Bay of Bengal. This stands for Bay of Bengal Initiative for multisectoral technological and economic cooperation. This BIMSTEC stands for Bay of Bengal Initiative for multisectoral technical and economic cooperation. And this BIMSTEC, this was established in the year 1997. And initially इसमें कुल 4 कंट्रीज इसके मेंबर्स थे. वो 4 कंट्रीज कौन कौन थी? इनिशियली इसमें बांग्लादेश इसका मेंबर था, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, एंड बाद में 1997 में म्यांमार आल्सो ज्वाइंट, एंड उसके बाद इन द ईयर 2004 में नेपाल एंड भूटान ज्वाइंट BIMSTEC. नेपाल एंड भूटान. सो प्रेजेंटली इसके मेंबर्स कौन कौन हैं? रिमेंबर दीज: बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, Nepal and Bhutan. The member countries are important. You have to remember these.
Moving on to question number third. Question number third is, consider the following statements. Statement first: India is a member of ASEAN and RCEP. Statement second: currently India holds the presidentship of WHO. Which of the above statements is are correct? Option A, one only. Option B, two only. Option C, both one and two. And option D, neither one nor two. आई होप आप सभी ने करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा, गेस कर लिया होगा. द करेक्ट आंसर टू योर थर्ड क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज टू ओनली. Statement 2 is correct. Remember, India is not a member of ASEAN and India is also not member of RCEP. This ASEAN stands for Association of Southeast Asian Nations and RCEP stands for Regional Comprehensive Economic Partnership. India is not a member of these two organizations and currently India holds the presidentship of WHO. एंड जो इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन, रिमेंबर दिस, डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ है, वो करंटली इसके प्रेसिडेंट है. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स आर द मेंबर्स ऑफ SCO. SCO stands for Shanghai Cooperation Organization. First is USA, then India, then China, and Pakistan. Choose the correct answer using the code given below. Option A, 1, 2, and 3 only. Option B, 1, 2, and 4 only. Option C, 2, 3, and 4 only. And option D, all of the above. That is, all of the above are the members of SCO, Shanghai Cooperation Organization. आई होप आप सभी ने करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा, गेस कर लिया होगा. द करेक्ट आंसर टू योर फोर्थ क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज 2, 3, and 4 are the members of SCO, and excluding USA, these are India, China, Pakistan. These are the members of SCO, Shanghai Cooperation Organization, and this USA, United States of America, is not a part of SCO. This SCO other members include Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, and Russia. These are the members of SCO. Remember, the members are very important from exam perspective. The members of SCO are India, China, Pakistan, then Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, and Russia. And जो SCO के headquarters है, this is headquartered in Beijing, China. At Beijing, China में इसके headquarters हैं, and this was established, and the year is important, this was established in the year 2001. 2001. Moving on to next question. Question number 5 is, which of the following is exclusively related to BRICS? Option A, ADB. Option B, NDB. Option C, AIIB. And option D, OECD. I hope आप सभी ने करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा, गेस कर लिया होगा. द करेक्ट आंसर to your fifth question is option B, that is NDB. NDB stands for New Development Bank. Exclusively the members are Brazil, Russia, India, China, and South Africa. The BRICS countries are the members are this NDB, New Development Bank, and this is again headquartered in China, but not in Beijing, in Shanghai. शंघाई चाइना में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, एंड दिस वाज एस्टैब्लिश्ड, द ईयर इज इंपॉर्टेंट,
NDB was established in the year 2014. Right? Moving on to your sixth question. Question number 6 is recently held BRICS summit was hosted by which country? Option A India, option B China, option C Russia, and option D South Korea. आई होप आप सभी ने करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा, गेस कर लिया होगा. एंड द करेक्ट आंसर टू योर सिक्स्थ क्वेश्चन इज option A, that is India. Probably in the month of September, this BRICS summit was held, and this was again this year held virtually. Virtually, this was held and chaired by Prime Minister of India, that is Narendra Modi. And in the year, and this was the 13th edition. This was the 13th annual summit of BRICS. This was held in India virtually, and the 12th BRICS summit, 12th BRICS summit, this was also virtually held in Russia. 12th in Russia and 13th in India, but virtually. Moving on to question number 7. Question number 7 is, which of the following are the members of G7? First is India, USA, Italy, Japan. Choose the correct answer using the code given below. Option A is 1, 2 and 3 only. Option B 2, 3 and 4 only. Option C 1, 3 and 4 only. And option D 1 and 4 only. I hope आप सभी ने करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा, गेस कर लिया होगा. द करेक्ट आंसर टू योर सेवेंथ क्वेश्चन इज ऑप्शन B, that is 2, 3 and 4 only. India is not a member of G7. Remember this, India is not a part of G7. What are the member countries of G7? USA, Italy, Japan, then Germany, then we have France, then we have Canada and UK. These are the member countries of G7. This was established, the year was 1975, and उसके बाद रशिया को इंक्लूड करके G8 एस्टैब्लिश किया गया था, बट उसके बाद रशिया को एक्सक्लूड करके फ्रॉम G8 दिस वाज अगेन एस्टैब्लिश्ड टू G7, reduced to G7. इसमें कुल 7 ही मेंबर्स रह गए. द मेंबर्स आर कनाडा, USA, UK, France, Germany, Japan and Italy. Moving on to your question number 8. Question number 8 is, which country currently holds the presidentship of G20? G20 is group of 20 countries. Option A is USA. You have to say about the presidentship. B is France, then Turkey, then Italy. I hope आप सभी ने करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा. द करेक्ट आंसर to your 8th question is option D, that is Italy. And since 2020, from last year, Italy holds the presidentship of G20. And अगर हम G20 की बात करें, the member countries और G7 countries जो मैंने आपको पहले ही बताए, कनाडा, USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, जापान एंड इटली. G7 प्लस 13 कंट्रीज़. वो आप कैसे याद रखेंगे, इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला याद किया है, आपको भी आपके साथ वो शेयर करूंगा मैं. आपको याद रखना है G7 प्लस. कैसे आप याद रखेंगे? वन सेकेंड. एक तो G7 कंट्रीज़ है प्लस आप से CE से मस्ती MSSSTII. G7 प्लस आप से मस्ती. A for Argentina,
A for Australia, B for Brazil, then C for China, E for European Union, M for Mexico, S for Saudi Arabia, S for South Africa, S for South Korea, T for Turkey, I for Indonesia and I for India. So G7 का पार्ट नहीं है इंडिया, बट G2 में इंडिया इज ए मेंबर. आपको याद क्या रखना है, G20 में एक तो है G7 कंट्रीज प्लस आपसे मस्ती. नोट डाउन दिस, आपसे MSSSTII. I will again repeat: Argentina, Australia, Brazil, China, European Union, Mexico, South Africa, Saudi Arabia, South Korea, Turkey, India, Indonesia. These are the members of G20. Moving on to question number 9. Question number 9 is, the term Brexit, sometimes seen in news, is related to which of the following countries' exit from European Union? Option A, Brunei. Option B, Brussels. Option C, United Kingdom. And option D, Russia. I hope आप सभी ने करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा, गेस कर लिया होगा. द करेक्ट आंसर to your 9th question is option C, that is United Kingdom's entry from European Union is known as Brexit. Officially डेट आप याद रखेंगे, on January 31st 2020 UK officially or formally left European Union. This is known as Brexit. That is UK's exit from European Union is known as Brexit. And this European Union was established in the year 1993. Right? And headquarters of European Union are at Brussels, Belgium. Brussels, Belgium. These are important points. You have to remember anyhow. आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम्स में. Moving on to last question. Question number 10 is, Ashok Lavasa is currently the vice president of which organization? Option A, World Bank. Option B, World Trade Organization. Option C, ADB, Asian Development Bank. And option D, AIIB, Asian Infrastructure Investment Bank. You have to say this Indian Ashok Lavasa is currently vice president of which organization? I hope आप सभी ने करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा, गेस कर लिया होगा. द करेक्ट आंसर टू योर 10th क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक. इस एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो है इंडियन है, वो अशोक लवासा. एंड आई होप प्रोबेबली अशोक लवासा जो थे वो एक टाइम पे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया भी थे, वन ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ इंडिया भी थे. रिटायर्ड IAS ऑफिसर है अशोक लवासा. ये करंटली ये वाइस प्रेसिडेंट है एशियन डेवलपमेंट बैंक के. एंड जो प्रेसिडेंट है वो है मसात्सुगु असाकवा. मसात्सुगु असाकवा ये करंटली प्रेसिडेंट है ADB के. एंड ADB के जो हेडक्वार्टर्स है दीज आर इन फिलीपींस. रिमेंबर दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं. दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज MCQ सेशन. होप दैट आपके एग्जाम्स में अगर ऐसे क्वेश्चंस आ भी जाएं तो आप वो आसानी से ईजिली आप वो करेक्टली अटेम्प्ट कर पाओ. थैंक्स. हैव अ गुड डे.